Okay, you all can see sensible, right? Okay, perfect. So let me just put it in Nifty only. Okay. Right now I cannot find, sit to get a stock, so I'll just do Nifty. So if we have to plan a trade, now this is, are you seeing my screen here? You see virtual trade here? So this is where you can plan your virtual trades. So I will just click on this. So these trades wala hai. So these are the few trades that I have taken. So everything I have not recorded, but मेरे few trades, ये मेरे exit भी करके मैंने exit भी किया. So we are learning all these strategies. So ये मेरे trade के ऊपर I will teach you all. अभी मैंने लिया था few days में I have exited this also. So I will show you all my trades. You know that मैंने क्या किया और क्यों exit किया, और ये same stock में same setup में मैंने दो strategies किए हैं, तो वो कैसे किए. I will show you all everything. Okay, so now supposing we want to put a virtual trade. Okay, so I will do add new strategy, and let's say Nifty long call example. Okay, I will do Nifty long call example. I did add. Now I have to do add order. Now okay, so I don't think so you can add it from here. वो उधर ही से जाना पड़ेगा. Wait, we'll come out of here. We'll go back. Okay, we'll go back. I'll go back to the main screen. So what are you all seeing? Are you all seeing that my sensible या virtual trade क्या दिख रहा है आपको? आपको virtual trade वाला दिख रहा है? Sensible दिख रहा है ना? Okay, superb. चलो. So now, yeah, great. So now we will go to strategy builder over here. Are you seeing the strategy builder? Home page. हाँ, superb. So strategy builder. So strategy builder, you click. Now build new custom strategy. ठीक है? So you want to do long call in Nifty. So first of all, you choose your expiry. यहाँ पे सब expiries are given over here. All right. So you say 27 Jan expiry. Now last traded price है OI है और Greeks है. Click on Greeks. Okay. So ये करंट एक्सपायरी नहीं, अपने नेक्स्ट एक्सपायरी करेंगे, नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी. ओके, सो वी कैन डू 27 अभी. कैन वी पिकअप, कैन वी डू 27 का? कैन वी बाय नाउ कॉल? वी कांट. ठीक है, वी विल हैव टू चूज 24th Feb. ऑलराइट, परफेक्ट योगेश थीटा. सो पिकअप 24th Feb. ठीक है, तो यहाँ से एक्सपायरी चूज करो आप. ऑप्शन है, फ्यूचर्स है, क्या है, अपने ऑप्शंस बात कर रहे हैं. ठीक है, सो यू आर नाउ वी आप यहाँ पे यू विल सी कॉल्स. This is calls and that's puts. Okay, so now look at the strike prices. Mouse is getting stuck. So 17,700. So let's see the Greeks. What is the ATM? ATM is 17,700. Correct. What is ATM? The strike which is closest to the current market price. Current market price is 17,617. Correct. So 17,617 is the current market price. So the ATM is going to be what? So
आपको अगर एटीएम कॉल बाय करना है, इफ यू थिंक यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, आपका व्यू क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आप या तो एटीएम बाय कर सकते हो कॉल सीधा, और pick a delta which is say 0.35. Say you will buy like say 35. So 18,100. What will you do? You can pick which strike? You can pick an 18,100 strike, right? Because that has a delta of, or even an 18,000 strike, or 18,000, yeah, 18,050 mein nahi ghusi, always look at round figures. So let's buy this 18,100 strike. Is everybody understanding? Strike price selection. Okay. So we will buy the 18,000. We will buy this. And then we will say done. Finished. पूरा सॉफ्टवेयर ने काम कर लिया आपके लिए. Okay, so this is मांगोगे मुझे मिलने खबर ये भी तुम ही लाना बहुत आई गई मगर इस बार okay, so this calculates everything and it gives you, ये break even भी उसने दे दिया आपको कि ये आपका break even point है, so इसके ऊपर you are going to make profit. Okay, can you control max loss? Of course, put a stop loss under your support level. You can control max loss. You will exit. जैसे आपका support टूट गया, अगर you are expecting the stock ऊपर जाएगा लेकिन support तोड़ के नीचे चला गया, you can put a stop loss and exit. That's I explained that to you. Just while we were doing the strategy, I explained this exact thing to you. So that's what I'm saying. Focus on what I'm saying rather than typing on the chat box. Because जब भी आप type करोगे, तो your mind goes into typing. When you're listening to me, you're focusing on what I'm talking. Okay. So that, Nishant, we cannot get into it in this class. How to calculate stop loss. Okay. You generally put it under your support band. So you either exit this trade at stop loss, or we will be basically having an inbuilt stop loss mechanism here. Okay. Now, this is what it is. So if now supposing we want to, yeah, so this trade, you can even record over here only, virtual trade. Are you seeing this? So I want to put it supposing in this next. Okay, so I will put it here. Here. Done. Confirm. Okay, so you okay. This trade has gone into your virtual trade. So now when this goes into your virtual trade, what happens? आपका अभी वो रियल टाइम काम करेगा जैसे आपका रियल ट्रेड है. ओके, वैसे वो रियल टाइम काम करेगा. नाउ आर यू सीइंग दिस ओवर हियर? IV chart. This is how you will check your IV. यहाँ पे निफ्टी है. So you Nifty IV, your volatilities are always annualized, right? So यहाँ पे खाली एक महीना दिखा रहा है. So you will have to go to your calendar and you will have to choose Jan. So say 21st Jan, or you can, yeah. So you see this 21st Jan. So now you got your whole IV ka picture. Okay, that's your high, that's your low, your lows here, that's your high, and you will calculate where you are compared to your highs, and that's how you will get your IV charts. Now IV charts, this is what I'm talking about. ये IV के high low values आपको चाहिए, तो ये कोई भी सॉफ्टवेयर आपको जो दे सकता है, आपको वो सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, because if you have to make money, you will need your data ना. सो डेटा आप कहाँ से लाओगे? वो जो भी आपको, अगर आपका ये if you're getting your data free from somewhere, great, not a problem at all. Okay, so what now? 22, 1 year we've taken, Jan 21st to Jan 22. Okay, so 1 year ka expire, you need 1 year ka window, so you go back and you make it to 1 year window. Now if you have to do long put,
Okay. So now I will go to strategy builder again. Now you want to supposing create a new strategy. Okay, so I'm just gonna just create a new strategy. Strategy builder. Okay, and so supposing save. Okay. Okay. So now I will say I want to build a new one. Build a new one. So now I want to buy a put. Okay. So when you buy a put, you will look at what? Put delta. You seeing all this over here? You're getting the put deltas over here. What delta will you pick? Pick. Which strike will you pick up over here? Which strike will you pick? Quickly on the chat box. Which strike will you pick? 17,300. Perfect. 17,300 is a good strike to pick. Yes, between 25 to 30. So what is between 25 to 30? 35? You can pick up 17,300. Got it? Just click on this. So 17,300 agar hai aapko, you want to buy this. So just do the B. B is buy, S is sell. Just do buy. Ho gaya. Done. Okay, you know your loss is going to be 11,825 and unlimited profit, and that's what it is. Got this, guys? It's as simple as that. Aapka pura simulation of the trade happens like this. Okay, this is why you need any software which can simulate the trade for you. ये पूरा आपका ये table आना चाहिए. Okay, or quickly you need to know your Greeks and you need to understand everything. Okay, now you can choose 17,200 also, not a problem. It's up to you. These are rules. Okay. Okay. Now we understood that we are one second. Let me take this call. Hello. Yes. So now single leg options. Okay. Single leg options. We are with yeah. So now when you're doing short leg, this thing, volatility for single leg long options is done. Okay, we did this. Yeah. When you have to short options, when you sell options, where should your IVs be? In section? In section? Selling options. Section 3? 5. Selling single leg options only in section 5. Remember my volatility example. Option का low value था 40,000. My insurance का low value 40,000. High value 80,000.
what if I go and sell an option when my IV value is say 60,000? 40,000 हाई था, 80,000 सॉरी 40,000 लो था, 80,000 हाई था. What if I go and sell options at 40,000, at 60,000, which is in the middle of 40 and 60? Is there a chance के 60 से 70 होए and 70 से 80 होए? Is there a chance or no? Where will Vega go? Is there a chance that the Vega will inflate up? Of course. Of course, there is a chance that 60, because if the lowest value is 40 and the high value is 80, तो 60,000 से ऊपर जा सकता है ना वेगा. आपने सेल किया है ऑप्शन यहाँ पे. सो व्हेन यू सेल समथिंग, व्हाट इज योर व्यू कि जो मैंने बेचा है वो अभी वैल्यू में कम होना चाहिए, राइट? ओनली देन यू विल मेक मनी. करेक्ट और नो? जब भी आप खरीदते हो तो आप जो बाय करते हो वो वैल्यू में इंक्रीज होएगा तो यू विल मेक मनी. अब जब आप कुछ बेचते हो तो वो बेचने के बाद वैल्यू में घटेगा, वैल्यू उसका घटेगा, तो आप पैसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? करेक्ट. एंड फॉर दैट आपका वेगा घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? योर वेगा शुड इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर सेलिंग? घटना चाहिए. एग्जैक्टली, इट शुड डिक्रीज. So if it has to decrease, how will you sell it in section 3? It has to be section 5. Because 3 से क्या probability है? 3 से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. Right or wrong? अब right in the center हो. You're right in the center. It can go up, it can go down. You want it to only go down. You don't want it to go up. Short selling में क्या होता है? When you sell options, what happens? What kind of risk are you putting on your head? Unlimited risk or limited risk? What is the risk? Risk is unlimited. Unlimited risk. So if you sell an option, in low IV conditions, and if your IVs shoot up, your prices have not gone down. Mind what I'm saying. आपका 17,300 अगर आपका जो स्ट्राइक आपने सिलेक्ट किया है, और से सपोजिंग राइट नाउ प्राइसेस आर 17,700, राइट? सो 17,650, ओके, ATM. सो 17,650 अगर आपका ATM है, माइंड यू द प्राइसेस आर नॉट मूविंग. ATM इज येट 17,650. ATM has not changed. ATM क्या है? 17,650 है, ATM कॉल है. और अगर वो 17,650 का ATM कॉल 50 रुपीज का है, एग्जाम्पल, then what happens? If this call is for 50 rupees और आपका IV शूट अप हो गया, माइंड यू इट इज नॉट मूविंग. योर ऑप्शन इज नॉट, योर प्राइसेस आर नॉट मूविंग. ATM अभी भी 17,650 है. आपका 50 रुपीज का कॉल ना 65 रुपीज हो जाएगा या 60 रुपीज हो जाएगा. क्या हुआ? प्राइसेस नहीं बढ़ा. प्राइसेस डिड नॉट गो अप. व्हाट वेंट अप? IVs वेंट अप. योर वॉलेटिलिटी वेंट अप. नाउ द सेम थिंग, ATM 17,650 ही है, लेकिन आपका IV केम डाउन. योर वेगा क्रैश्ड, योर वॉलेटिलिटी इज क्रैश्ड इन द मार्केट. सो जब ये होता है तो आपका 50 रुपीज का कॉल इमीडिएटली 40 रुपीज हो जाएगा. Are you understanding? If your IV goes down, your option premium crashes. IV goes up, option premium goes up. बाई सेल तो आपने किया है, वो मार्केट को थोड़ी ना पता है आपने बाई किया है या सेल किया है. दिस इज द क्वालिटी ऑफ योर कॉल एंड योर वेगा. You cannot sell an option unless it is here very inflated, sorry. Because यहाँ से is it possible कि ज्यादा ऊपर जा सकता है? Is it possible? Of course it's possible. Anything is possible. But that is not something that happens regularly. एक आध बार होगा भी, ओके. लेकिन ऑन अ नॉर्मल डे एंड नॉर्मल केस, यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? What is the probability? What is more probable? The Vegas will go up or down? Vegas will go down. More probability of it going down than going up, because ऊपर fat tail हो जाएगा then. Okay, this is like a black swan event that यहाँ 3 standard deviation से भी ऊपर चला गया वेगा. So होता है, it's not that नहीं होता है. Like if there is a mega event in the market and all, new levels बनते हैं volatility के, high levels के,
मैंने वो जो 40 और 80 का जो एग्जाम्पल दिया था और सुनामी एक्चुअली आ जाता तो 80 का 120 भी बन जाता ऊपर साइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन दैट इज बेसिकली एन लाइक एन abnormal event. So in an abnormal event, things can happen, but normally they don't happen. Okay. So selling is only in section 5, not otherwise. Okay. Call selling karo ya put selling karo, it has to be here. So this is how we will take care of the wake up. Now, strike selection, you will select ATM or OTM. ATM karo, no problem. But OTM agar aap karo, I will not really look at deltas over here, but I will look at my stop loss level. What will I look at? My stop loss level. Because अगर आपका सब या रेजिस्टेंस है, आपका अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस डालोगे कि नहीं डालोगे? बिकॉज दिस इज द रेट वेयर दिस इज द रेट एट विच यू विल एग्जिट ट्रेड. यस और नो? यू विल एग्जिट ट्रेड अबव रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस के ऊपर आप स्टॉप लॉस डालोगे कि भाई ये रेट के ऊपर मैं ट्रेड में से निकल रही हूँ. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बिकॉज आपका स्टॉप लॉस हो गया. दैट मीन्स नाउ द प्राइसेस आर गोइंग अप, दे आर नॉट गोइंग डाउन. करेक्ट. सो वो लेवल पे हमेशा कॉल सेल करना चाहिए एट स्टॉप लॉस लेवल. जो भी आपका स्टॉप लॉस की प्राइस है वहां पे सेल योर कॉल. व्हाई? बिकॉज what is the view? Not above my strike price. Yes or no? Not above my stop loss. Stop loss, I'm exiting the trade. If the prices go above my stop loss, I'm exiting the trade. Very important to put a stop loss here. Super important. Without a stop loss, you can't take a trade only. Impossible. Okay. So not above my stop loss, not above my strike price. Is it clear? Is everybody understanding? जो भी stop loss level है वो strike का आप call sell करोगे. Okay. Now, okay. Okay. Now, so yes, so this is basically your break evens and all. It's given over here. लेकिन आप अगर option simulating software use करोगे वो option आपको सब calculate करके देता है अपने आप. Which strategy, when will you sell these options? Now, who's your best friend in this strategy? When you're selling options, who's your best friend? Who's your best friend? Theta. Yes. Theta is your best friend. Your theta is your best friend because आपने जो option बेचा है वो उसको zero करने वाला है. वो कौन करेगा? Theta. Correct? So you need to help theta because he is your best friend. वो आपको help कर रहा है, आप उसको help करो. तो आप कैसे उसको help करोगे? By executing this trade in the last week of the expiry. Best time to execute a trade is on Friday. Because Friday अगर आप closing time पे around 3 o'clock, 3:15, if you're selling your option, तो Saturday, Sunday आपको without market movement मिल जाता है and theta works on the weekends as well. So Friday अभी आप before market close, like I'd say 3 o'clock or 3:15 if you do your sell calls and sell puts, okay? So market anyways closes. You don't want movement. ये ट्रेड होने के बाद आपको मूवमेंट नहीं चाहिए, राइट? यू वांट कि भाई जहां मार्केट है वहां पे बस रुको आराम से, आपको मूवमेंट नहीं चाहिए. ठीक है, डाउन साइड मूवमेंट हो गया आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको मूवमेंट नहीं चाहिए. पॉइंट इज व्हाट? आई डोंट वांट मूवमेंट, आई डोंट वांट एन अपसाइड मूवमेंट. एंड विल इट बी पॉसिबल कि कभी भी अपसाइड मूवमेंट नहीं आए? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल. ऊपर जाके स्टॉप लॉस कभी भी हिट होता है? नहीं होता है. ऑफ कोर्स होता है, मेरा भी होता है. ओके, सो रेजिस्टेंस होता है ब्रेक, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि भाई मैं उसको टाइम नहीं दूं. Let me give it less time. So I will do this trade on Friday. Okay, because Saturday, Sunday is a holiday. अगर long weekend मिल रहा है तो superb. Nothing like it. Then you have your Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. 4 days is the only movement that you're risking. खाली 4 दिन का market movement आपके पास आप risk कर रहे हो. ठीक है? You will exit trades 1 day before and I will tell you how to exit. Okay, so but disclaimer, there is a lot more of Greeks to be understood when we are doing short calls and short puts. And we are not getting into this right now. I'm just explaining this to you all as a setup. We have not done this strategy completely. Okay, so do not do this strategy. Avoidable, completely avoidable. Okay,
because there is a lot of vega theta ratios and all which you need to understand and all that, which we are not getting into in this class. Okay, that becomes a little bit of an advanced class, very advanced class. All right, not little bit. Yahan pe we are doing advanced stuff, but that becomes super advanced. So we are not getting into all that. So option selling is not something that you need to understand gamma as well. So ये सब अपने नहीं कर रहे हैं ये class में, ठीक है? I'm just explaining you all the setup, but do not do it at all. Okay, why I'm explaining you the setup, because you need to understand how short call works, because we are going to be using this in our strategies. That's why I'm explaining this to you. Okay, so choosing this is always last week of the expiry. This is the payoff graph, right? So limited profit, premium received to the extent of premium received, and this is unlimited loss if the resistance level breaks and if it goes up. Okay, so what is an ideal situation here? So when you do a long call, you want to see a long build up, correct, on the option chain. या आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देखो, नहीं तो आप बिल्डअप्स देखोगे, राइट? तो यू विल सी लॉन्ग बिल्डअप. अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो यू विल वांट टू सी शॉर्ट बिल्डअप्स, करेक्ट? Either you want to execute it at resistance on a technical analysis chart, or on an option chain you will look for what signs? Short buildups. करेक्ट? अगर शॉर्ट बिल्डअप्स हो रहा है on the option chain, आप शॉर्ट बिल्डअप्स करोगे. Now, when you are doing a short call, what do you want to see? Long unwinding. What do you want to see? Long unwinding. You do not want to see buildups. No buildups. Okay, you do not want to see buildups. You want to see long unwinding happening over here. Okay, long unwinding is what? Target has come. If my target has come, I know that now the stock is going to go down. Okay, so what you want to see? Long unwinding, no buildups. Clear, everybody? Or you are at a higher time frame resistance, even then it works. All right, now short put, you are mildly bullish, so you will sell ATM put, or you can even sell OTM put. So ATM put is not something that I ever advise, lekin yes, you can do it if you want to, if you're already at resistance and good level, no problem. OTM put, so कौन सा OTM put आप कहाँ पे, आप कौन सी strike pick करोगे? Stop loss. Stop loss जो आप लगाओगे under the support, अगर आप stop loss लगाओगे तो आप उसको, you will sell that strike. Clear? Strike is what? OTM is what? Stop loss level. All right. Now profit is limited to premium received. Stop loss is unlimited. Break even, yes, all that. Okay, you know, but I mean, you know, it's a formula here, but you don't need to know. Best time to trade is a week, 10 days before expiry. I would say Friday. Clear? So ये आपकी 4 strategies हो गई. Long call, long put, short call, short put. Clear, everybody? Clear? Okay. Now we will start with almost. I think this should be very clear by now. Now what we'll be doing is income and hedge strategies. Okay. That too, obviously you need to. There is no delta specifically. I would generally use a stop loss level, or you can use a strike जहाँ पे maximum open interest build हो रहा है. That is also one more thing, because we saw ना maximum call side, अगर maximum जो OI है, that's a resistance for the market.
कॉल के साइड मैक्सिमम OI है, दैट्स अ सपोर्ट फॉर द मार्केट. सो वहां पे जो बिल्डअप जो है, वहां पे जो जहाँ पे भी मैक्सिमम OI है कॉल साइड, यू कैन पिक दैट स्ट्राइक. ओके, एंड मैक्सिमम जहाँ पे बिल्डअप है पुट साइड, यू कैन पिक दैट साइड फॉर सेल पुट्स, बिकॉज दैट बिकम्स अ सपोर्ट फॉर द मार्केट. ओके, बट ऑल्सो टू लेट यू नो दैट अगर कोई लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, सो जो जो लोग मार्केट में पोजीशन लिए हुए हैं, द बिग मनी, दे विल आल्सो मूव द स्ट्राइक्स अप एंड डाउन. तो आप उनके भरोसे आप अगर जाके कॉल पुट सेल किया, बाय करके आए हो, सेल करके आए हो, आपको पता नहीं चलेगा उनकी पोजीशन कब मूव हो गई. Okay, so you have to be very careful with these things. It's not something that you do it. I will not recommend this at all to anybody. No sell calls and no sell put trades right now. Okay, don't do it. Okay, we move on to the income and hedge strategies. One of the simplest way to explain this technique is that of insurance. Okay, now ये जो strategies है, आप futures के साथ options को club करके करोगे. These are not plain vanilla. Now, first, before we start with anything, a future, right? So, future की profit क्या है? Profit profile क्या है? If your trade is right, ठीक है, आप bullish हो and your trade is right, yeah, delta one, yes, we are not talking about the delta, I'm talking about the profit and loss. So what kind of a profit? Yes, अनलिमिटेड लॉस एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट. अनलिमिटेड प्रॉफिट सबको बहुत ही अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, एवरीबडी लव्स अनलिमिटेड प्रॉफिट. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड लॉस. करेक्ट. सो अगर अनलिमिटेड लॉस को, तो फ्यूचर्स वी नो इज अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड विथ, बिकॉज बहुत फास्ट जाता है, डेल्टा वन है, अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, 1 रुपये से 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया स्टॉक ऊपर जाएगा तो 1 रुपया मिलता है. ऑप्शंस में इतना नहीं मिलता है, जितना डेल्टा है उतना मिलता है, राइट, उतना ऑप्शन प्रीमियम आपका मूव होगा. सो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम इज दी अनलिमिटेड लॉस. करेक्ट, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट, वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फ्यूचर. सो यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि ये दिस थिंग गिव्स यू अनलिमिटेड लॉस. ठीक है. सो जब ये अनलिमिटेड लॉस देता है, तो हाउ विल वी यूज ऑप्शंस to make that unlimited loss limited? Then you will enjoy trading of this strategy, because आपको profit भी अच्छे से मिल रहा है, plus आप उसको hedge करके you will try and use an option to make your unlimited loss को limited. You will hedge your future. Okay, so you will hedge your future. So these are called hedge strategies or income strategies. All right, so there are 3 strategies that we will learn: covered call, covered put, and collar. Okay, now guys, when I teach, I can teach you ke covered call kya hai, I will teach you covered put kya hai, I will teach you collar kya hai. That's one way. By when we do 24 strategies, you'll be completely confused, और आप पहले वही मेमोराइज करने में लग जाओगे कि भाई कवर्ड कॉल में होता क्या है, कवर्ड पुट में होता क्या है, कॉलर में होता क्या है. बिकॉज अब तो 3 स्ट्रैटेजीज है, अपने 25 स्ट्रैटेजीज करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टीच यू स्ट्रैटेजीज टुगेदर इन अ बंच. ओके, मैं पूरे बंच में एक साथ में आपको स्ट्रैटेजीज हर एक टाइप के सिखाऊंगी. And what I will do is that I will build up with a basic strategy and I will keep building on it. Okay, I will keep building on it. So the advantage over here is that you will understand कि एक strategy evolve कैसे हुई दूसरी strategy में. Okay, एक strategy से दूसरी strategy कैसे बनी और कैसे आपने पूरे permutations combinations किए. All right, so this is how I'm going to teach you all, and not everything separately. हर एक स्ट्रैटेजीज के मैं आपको रूल्स बताऊंगी, हर एक स्ट्रैटेजीज के मैं आपको चार्ट सेटअप्स फ्रॉम माय साइड बताऊंगी. ठीक है, चार्ट सेटअप्स आर जनरली वी डू नॉट इंक्लूड दिस, बट आई विल एक्सप्लेन यू द चार्ट सेटअप फ्रॉम माय साइड. I will also, I have taken some trades, I will share my own trades also with you all. Okay,
Now just be with me. Okay, so we will be learning about a covered call, covered put, and a caller. Now, covered call. So what is a covered call strategy? There's no stock, you will do future. You will buy future and you will sell out of the money call. ये क्या strategy है? You will buy a future and you will buy OTM call. Okay? Strike selection is OTM call. Now, do you have an option to select the strike for future? कोई option है कि जो future का price है वो है, right? Or can you select strikes for future? You can't, right? जो है वो ही है future की price. So future के price आप buy करोगे और आप OTM call sell करोगे. Now what is this OTM call? आप कैसे OTM call करोगे? Understand one thing. Delta जो अपने देख रहे थे, that is only for buy call and buy put. Because nothing else is helping it. आप ही वो खाली एक ही इंस्ट्रूमेंट अपने आप चल रहा है, बाय कॉल एंड बाय पुट. इन फ्यूचर इसको हेल्प कर रहा है ना कोई और दूसरा ऑप्शन का अंदर आके उसको हेल्प कर रहा है. नोबडी इज हेल्पिंग इट. ही इज बाय हिमसेल्फ. द लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट. That is why we need the delta to choose the right delta for acceleration. When we are doing strategies, you will forget about the delta 25 and 30. You will forget about that. Why? Because यहाँ पे अभी combinations हो रहे हैं. Future भी आ रहा है, call भी आ रहा है. I mean, too many things are happening now. Now, not only one instrument is running. So everything affects each other. So at that time, do not now look at your call 25 delta. But understanding has to be there कि 25 से acceleration चालू होने वाला है delta का. But now strike selection, now you will tell me, should I pick the 25 delta? You can if you want to, but I don't think so. You need to choose this strike by looking at delta. Okay, I hope that's clear. So what strike will you choose over here? You will choose the sell OTM call, the strike beyond which you think the stock will not go. Did you understand? I don't think the stock is going to go above. Reliance की बात कर रहे हैं अपने. Reliance current market price is say 2640. Okay, so 2640 agar is the current market price of Reliance. You think Reliance will not go above say 2480. 2480. ठीक है, 40 पॉइंट्स का मूव आपको दिख रहा है रिलायंस में कि 2440 से 2480 जाएगा. आपको नहीं लगता है कि 2480 से ऊपर जाएगा रिलायंस. तो आप क्या करोगे? आप फ्यूचर बाय कर सकते हो एंड 2480 का कॉल सेल कर सकते हो. आर यू विथ मी? You will buy future and you will sell 2480 call. Where did you get 2480 from? That is the price you think Reliance is not going to go above 2480. Got it, guys? I hope this is clear. Strike selection. Clear? Okay. So you can also pick up the long this thing जहाँ पे वो build-ups जहाँ पे हैं, that also you can see. ठीक है कि build-ups कहाँ पे है और आप वहाँ पे call side the biggest the maximum number of open interest, that also you can see. Okay, now you will do OTM call, correct? Okay, right? So this is there, break even. Now expiry, the best time to trade this is 10 days before expiry. But I would say you can trade this even otherwise, not a problem. Because it's a sell call over here. That is why it is written that you do 10 days before expiry, but it is okay to even do it otherwise. Okay. Now, 10 days before expiry is going to give you the best profits. Okay, I will show you all how. I'll come to the setup. Okay. Now, you will this thing will you look at? IB conditions, maybe section 4. But जब भी कोई भी फ्यूचर इन्वॉल्व होता है, when you're doing a strategy, your volatility will not matter so much कि वेगा कहाँ पे है.
It will not matter so much. Okay. Why will it not matter so much? Because future is a very powerful instrument anyways, जिसको थीटा अफेक्ट नहीं करता है. Okay, so you do not need to basically look at the IVs when you are doing any strategy where a future is involved. Okay, any strategy where a future is involved, you will not do a it's okay what the vega is, but अगर IV high है तो आपने sell call किया है, right? आपने sell call किया है, you bought future and you sold call, तो you are receiving premium. So obviously आपको premium ज्यादा मिलेगा if the IV is high. So that's an advantage. Okay, that's an advantage, but it is not a requirement कि ये अगर नहीं है तो आप trade नहीं लोगे. So that is not a requirement. You can take the trade regardless, even if the IV is in whatever conditions. Only a higher IV will help. Okay, now. Okay, so I have an example here of covered put of a HCL Tech call. I mean this strategy. Now, yes, one lot. Buy one lot, sell one lot. Buy one future, sell one. Okay. Now, so HCL Tech current market price at 1238. What is the outlook? Mildly bullish. So what is the trade? Buy September future at 1238 and sell 1260 ka call. Okay. Now see, this was the 1260 ka call. So there would be a resistance here. So I have sold this call. Okay. And you are buying a future. So this is the trade. Are you all understanding? Are you all understanding? You buy future and you sell call. Buy future and sell call. What is there to repeat, Nishant? You will buy future and you will sell call. Okay. This is the trade. Now see this. You buy one future. I've put this in the on the sensible, okay, and I'm showing this entire payoff. You will buy one future, you will sell one call. Uska payoff kya hai? Maximum profit is going to be 30,000 on this trade. Maximum profit is going to be 30,000, and what is the loss? Unlimited. What is the loss? Unlimited. Why is it unlimited? Because आपने here it is, my setup. Okay, that's my HCL Tech ka. Okay, this is just a setup. All right. So this is just a setup of Asian Paints. So this is just to explain to you all. So I have a bullish and a bearish setup, which I've put up as an example. And I'm just showing you that how to use this setup. So this is a buy call. This is a bullish setup. That's a support. Okay. यहाँ पे you saw bullish sign. So आपको अभी and यहाँ पे there is a resistance. Okay. So you know कि भाई यहाँ से ऊपर प्राइस जाने वाला नहीं है. Right? What is your view? कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है. So if you do a long call, supposing your IVs are proper, ठीक है, IV अगर सेक्शन 1 में है तो ये आपने पूरा सेटअप प्लान किया. अभी आप बुलिश हो यहाँ पे. How bullish are you? Very bullish or little or mildly bullish? View क्या है यहाँ का? Very bullish or mildly bullish? First, let's understand the view.
माइल्डली बुलिश, सुपर। अब माइल्डली बुलिश, आप वेरी बुलिश नहीं हो, बिकॉज यहाँ पे सीधा ऊपर फ्रेश रेजिस्टेंस है। आपको पता है यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला नहीं है, यहाँ पे स्टॉप तो होगा, ये यहाँ पे स्टॉप होगा, कंसोलिडेट होगा, 1-2 दिन 4-5 दिन यहाँ पे रहेगा, फिर टूट के ऊपर जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ा तो रुकेगा यहाँ पे, रुक के या तो नीचे आ जाएगा या रुक के इसको तोड़ के ऊपर चला जाएगा, बोथ आर पॉसिबल। लेकिन if you are 10 days before expiry, yeah, if you're on Friday, or if you think that okay, I'm on say Wednesday and next Thursday is the expiry, तो 10 दिन है मेरे पास, और 10 दिन में यहाँ से यहाँ सो जा सकता है और यहाँ रुक भी जाएगा। Okay, so now if the prices go up, you're mildly bullish, so you will buy a future. You will buy a future and you will sell an OTM call. This OTM call you will sell below the resistance. Where will you sell? Below resistance, not at resistance. You will sell this below resistance. I will explain to you all in some time why. First, understand the PNL. So, did you understand the chart setup? Buy future and buy this below resistance. Now, where is your stop loss going to be? Under support. Why is it very, very important to put your stop loss? Because this trade can give you unlimited loss. How? आपने यहाँ का फ्यूचर अपने यहाँ सेल किया, you sold call, you received premium. Correct? So you sold call, you received premium. So what is how much premium did you receive over here? So 18 rupees. Okay. So 18 rupees premium you received. ठीक है? So you received 18 rupees premium. Okay, this is a different chart and that's a different example. Look at the setup. So supposing you received a 20 rupees premium. Sell call करने के बाद you received a 20 rupee premium. So ये जो 20 rupees premium है, and now if the prices start going down, prices future का नीचे जाना चालू हो गया. So when prices go down, your future that you have bought is now making a loss. Yes or no? फ्यूचर लॉस कर रहा है बिकॉज आपने बाय किया, अब वो नीचे जा रहा है, ऑब्वियसली फ्यूचर लॉस कर रहा है. सो आपके पास 20 रुपए का प्रीमियम है ना, आपको मिला बाय सेल कॉल, वो आपको बफर देगा बिकॉज आपने ऊपर का सेल कॉल किया, यू रिसीव प्रीमियम. सो प्राइसेस जब नीचे जाएंगे फ्यूचर के, तो कॉल का भी प्राइसेस नीचे जाएगा. जो 20 रुपीज का जो कॉल है 3100, that will start becoming 18 rupees, 16 rupees, 14 rupees. Yes or no? Because prices नीचे जा रहा है. So prices जब नीचे जा रहे हैं तो आपका sell call is also going down in value. So you will have protection up to 20 rupees. Yes or no? कितना protection है आपके पास? 20 rupees. Beyond 20 rupees, do you have any protection? No protection. आपका कॉल जीरो हो गया, आपका कॉल जीरो हो गया, अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अभी आप यू आर इन अनलिमिटेड लॉस. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रैटेजी नाउ? सो बाय डूइंग दिस, आप बोलोगे तो मैं क्यों करूँ ये? भाई आपको बफर मिल रहा है 20 रुपए का, नहीं तो आपको वो भी नहीं मिलता. ओके आपको यहाँ पे 20 रुपीज यू आर रिसीविंग. इफ योर लॉस गोज डाउन, आई मीन इफ लॉस हैपन्स, नहीं तो ये भी नहीं मिलता. नाउ you will have a cushion. Now the point is the price. Now understand, so you understood the loss part of it, that what happens over here and how what happens when the prices go down. ठीक है, यहाँ का अगर सपोर्ट टूटा तो आपका फ्यूचर इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग लॉस, एंड ये आपके पास इसका 20 रुपए का क्वेश्चन है. ओके, बियॉन्ड दैट यू डोंट हैव एनीथिंग. अगर वो खत्म हो गया तो दैट मीन्स योर फ्यूचर इज गोइंग टू स्टार्ट मेकिंग a lot of loss. Now unlimited loss बाजू आपका निकल जाएगा future. Now put that aside. Now let's say that okay, your trade is working.
ओके आप बुलिश थे, माइल्डली बुलिश थे, और एक्चुअली माइल्डली बुलिश हो रहा है, स्टॉक इज गोइंग अप. सो व्हेन द प्राइसेस गो अप ऑफ द स्टॉक, what is happening to the call that was at 20 rupees? Is the price going up? यहाँ से अभी फ्यूचर 20 whatever 29 हो गया, अभी नाउ आपका प्राइसेस हो गया 3000. व्हाट इज द प्राइस नाउ? 3000. जब भी 3000 में फ्यूचर हो रहा है तो आपके कॉल के प्राइस क्या हो रहा है? पहले जो जब भी फ्यूचर वाज एट से 29 25, योर कॉल वाज 20. तब जब फ्यूचर ऊपर जा रहा है तो व्हाट विल हैपन टू द कॉल? प्राइस विल इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. Correct. Your call will price will increase. Why? Because your future is increasing in value. Underlying is increasing in value. So obviously, when underlying is increasing, call value will increase. Correct. So जो 20 रुपीज का कॉल आपने बेचा था, वो अब क्या हो रहा है? प्रॉब्ली 22 रुपीज हो गया है. प्रॉब्ली अब 24 रुपीज हो रहा है. प्रॉब्ली अभी आप 26 रुपीज हो रहा है. सो आपका कॉल का प्राइस बढ़ रहा है as your future is increasing. Okay, your call price is also increasing, your future price is also increasing. Now, why did I say sell a call below support? Sell a call below support. Why? Because ये जब ये प्राइस ऊपर जाएगा, you wanted to stay above your strike price. आपका रेजिस्टेंस चार्ट पे कहाँ पे है? 3100. और से आई वुड से 3200 पे रेजिस्टेंस है, 3150. ओके, अगर 3150 का आपका रेजिस्टेंस है, या आई वुड से 3200 पे आपका रेजिस्टेंस है. ओके, आपका रेजिस्टेंस इज वे 3200. तो आप 3200 पे नहीं कॉल सेल करोगे, आप 3100 का कॉल सेल करोगे. राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस से क्या होगा. नाउ फर्स्ट टेल मी दैट. उसको हिट करके प्राइस नीचे आएगा? रेजिस्टेंस को हिट करके प्राइस नीचे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. सो जब प्राइस नीचे आएगा है रेजिस्टेंस को, तो यहाँ तो आपका यहाँ पे हु इज द ड्राइविंग यूनिट? प्रॉफिट कौन ड्राइव कर रहा है? फ्यूचर ड्राइव कर रहा है. यस, फ्यूचर इज ड्राइविंग योर प्रॉफिट. ये कॉल का काम क्या है? कॉल आपको हेज के लिए आपने डाला है, बिकॉज आपको पता है यहाँ से ऊपर तो जाना नहीं है प्राइस. लेट मी गेट 20 रुपीज ना, दैट विल एक्ट एज अ कुशन फॉर माई फ्यूचर अगर उल्टा गया ट्रेड तो. करेक्ट? बिकॉज आपको पता है यहाँ से ऊपर तो जाना नहीं है. ऐसा नहीं है कि पूरा क्लीन रोड है, पूरा बड़ा सा रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो प्राइसेस रुकने वाले हैं. तो चलो ना, लेट मी सेल अ कॉल एंड गेट सम प्रीमियम. ओके, सो दैट्स व्हाई यू डिड दैट. सो नाउ as we go nearer to expiry, what happens to the time value? Zero, decreases. Right? वो आपका जो time value decreases. Which is the most expensive option on the option chain? Are you understanding how we are applying our studies? ATM. आपको लग रहा होगा कि अरे अपना इतना सीख रहे, इतना सीख रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ यू आर अप्लाइंग दिस? एंड हाउ विदाउट, अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता है और मैं आपको बोलूँ ये करो ये करो ये करो, यू विल नेवर अंडरस्टैंड ओनली कि ये क्यों करना है. यूज इट इंटेलिजेंटली. सो दिस इज नॉट अ रूल. ये मैं करती हूँ, जो मैं करती हूँ मैं आपको सिखाती हूँ. बिकॉज मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पे, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट टू यू. ओके, आपको सीधा रेजिस्टेंस पे सेल करना है, आप कर सकते हो. रूल नहीं है कि रेजिस्टेंस के नीचे करना है. ये टेक्निक मेरी है. And why I do that technique? Because I want to maximize my profits. How will I maximize my profit? I want this option to go near to expiry. जितना एक्सपायरी के बाजू में मैं उसको स्क्वायर ऑफ करूंगी, मुझे इसमें प्रॉफिट दिखेगा. इफ इमीडिएटली जैसे ये प्राइस ऊपर गया, okay, now put all your logics here. Okay, put all your logics of options and Greeks जो अपने सीखे थे, पूरे लॉजिक अभी इधर लगाइए. यहाँ का जहां पे आपने जब सेल किया और ये ऑप्शन, ये फ्यूचर ऊपर आ रहा है, इसका डेल्टा एक्सेलरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कॉल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. सो कॉल का डेल्टा एक्सेलरेट हो रहा है जब भी आप ये फ्यूचर ऊपर जा रहा है.
सो जो कॉल आपने 20 रुपए में बेचा है, बाय द टाइम ये एक्चुअली ऊपर फ्यूचर उसके पास जाए और एटीएम बने, अगर आप एकदम इसको रेजिस्टेंस को चिपका के अगर आप बेचोगे तो एटीएम बन गया कि नहीं बन गया ये कॉल? बिकॉज आप रेजिस्टेंस पे सेल करोगे, एग्जिट करोगे, तो दैट मीन्स आप एटीएम पे सेल करोगे। एटीएम का वैल्यू जीरो पे आप पूरा टाइम वैल्यू भरा हुआ है, एंड दैट टाइम वैल्यू विल नॉट शो यू द प्रॉफिट्स। आप बोलोगे अरे ये मेरे स्ट्रैटेजी में तो 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, ये मेरे को क्यों 10,000 दिख रहा है? अभी मेरा तो टारगेट आ गया। अरे 30,000 एट एक्सपायरी मिलने वाला है, आज नहीं मिलेगा। आज क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो कॉल जीरो होना चाहिए ना, वो 30 रुपया लेके बैठा है उसके ऊपर वैल्यू, जिसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए थी। उसका प्राइस 30 रुपीज है, आपका प्रॉफिट ही आपको नहीं दिखेगा। यू विल से अरे क्या है ये प्रॉफिट क्यों नहीं दिख रहा है? अरे नहीं दिख रहा है क्योंकि कॉल लॉस दे रहा है आपको। सो व्हाट शुड यू डू? Let this call become in the money. If you let it become in the money, in the money में टाइम वैल्यू क्या है? क्या है टाइम वैल्यू? जीरो एट एक्सपायरी, एट एक्सपायरी। लेकिन टुवर्ड्स एक्सपायरी टाइम वैल्यू रिड्यूस होती है और क्या आ जाता है अंदर? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू में तो कहाँ आपको प्रॉब्लम है? यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विथ इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट्स द रियल वैल्यू, दैट विल गिव यू द प्रॉफिट्स। प्रॉब्लम इज द टाइम वैल्यू, जिसकी वैल्यू जीरो है, वो अभी आप 30 रुपया लेके बैठा है, वो 30 रुपया आपका आपको लॉस दे रहा है। आपने तो कैलकुलेट उसको जीरो पे किया था। सो लेट इट गो अबव द सेल कॉल। एंड अगर सेल कॉल रेजिस्टेंस को चिपका के है तो वहीं से डायरेक्टली नीचे आना चालू हो जाएगा? नहीं ना, ऊपर जाने दो ना उसको, उसको ऊपर जाने दो and give it room, let it stay above your strike price. If it stays, the more it stays above your strike price, you will see कि खाली strike price के ऊपर रहने से आपका प्रॉफिट रोज बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू जो, क्योंकि फ्यूचर तो एक 1 डेल्टा है उसका, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऊपर जा ही रहा है। प्रॉब्लम ये सेल कॉल है, बिकॉज सेल कॉल जो है, जो 20 रुपये में आपने बेचा था, वो अभी 30 रुपये का हो गया है, और 20 रुपया भी ओटीएम था। जब ये आपने 20 रुपये का बेचा तभी भी उसका वैल्यू जीरो था, और आज भी उसका वैल्यू जीरो है, लेकिन है 30 रुपीज उसके पास, राइट? सो वंस इट बिकम्स इन द मनी, यू विल सी दैट एवरी डे उसमें से टाइम वैल्यू रिड्यूस होएगा। You will see profits coming into your account every single day passing. और ये प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? ये सेल कॉल जो डीके हो रहा है ना, वहां से आ रहा है। ओके, बिकॉज उसको डीके हो के जीरो बनना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज एवरीबडी विथ मी? ओके, दिस इज ऑन अ चार्ट. Did you all understand? Okay. Okay, so now guys, we will take a break till 11:30. All right. So ये मेरे flow me, I forgot that I need to give a break at 7. So I'll see you back at 11:30. Okay. Then we'll go on to the next strategy. See you all.
we start. More trader unlocked. With anything, a future, right? So future की profit क्या है, profit profile क्या है? If your trade is right, ठीक है, आप bullish हो and your trade is right, yeah, delta one, yes, we are not talking about the delta, I'm talking about the profit and loss. So what kind of a profit? Yes, unlimited loss and unlimited profit. Unlimited profit सबको बहुत ही अच्छा लगता है, no problem, everybody loves unlimited profit. लेकिन problem क्या है? Unlimited loss, correct? So अगर unlimited loss को, तो futures we know is a superb instrument to trade with, because बहुत fast जाता है, delta one है, unlimited profit मिलता है, 1 रुपये से 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया स्टॉक ऊपर जाएगा तो 1 रुपया मिलता है. ऑप्शंस में इतना नहीं मिलता है, जितना डेल्टा है उतना मिलता है, राइट? उतना ऑप्शन प्रीमियम आपका मूव होगा. सो प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम इज द अनलिमिटेड लॉस, करेक्ट? अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट्स अ सुपर्ब इंस्ट्रूमेंट, वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर. सो यहाँ का प्रॉब्लम क्या है कि ये दिस थिंग गिव्स यू अनलिमिटेड लॉस, ठीक है? सो जब ये अनलिमिटेड लॉस देता है तो हाउ विल वी यूज ऑप्शंस to make that unlimited loss limited? Then you will enjoy trading of this strategy, because आपको profit भी अच्छे से मिल रहा है, plus आपका आप उसको hedge करके you will try and use an option to make your limited loss, unlimited loss को limited. You will hedge your future. Okay, so you will hedge your future. So these are called hedge strategies or income strategies. All right, so there are 3 strategies that we will learn: covered call, covered put, and collar. Okay, now guys, when I teach, I can teach you कि covered call क्या है, I will teach you covered put क्या है, I will teach you collar क्या है. That's one way. By when we do 24 strategies, you'll be completely confused, और आप पहले वही मेमोराइज करने में लग जाओगे कि भाई कवर्ड कॉल में होता क्या है, कवर्ड पुट में होता क्या है, कॉलर में होता क्या है. बिकॉज अब तो 3 स्ट्रैटेजीज है, अपने 25 स्ट्रैटेजीज करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल टीच यू स्ट्रैटेजीज टुगेदर इन अ बंच. ओके, मैं पूरे बंच में एक साथ में आपको स्ट्रैटेजीज हर एक टाइप के सिखाऊंगी. And what I will do is that I will build up with a basic strategy and I will keep building on it. Okay, I will keep building on it. So the advantage over here is that you will understand कि एक strategy evolve कैसे हुई दूसरी strategy में. Okay, एक strategy से दूसरी strategy कैसे बनी और कैसे आपने पूरे permutations combinations किए. All right, so this is how I'm going to teach you all, and not everything separately. हर एक स्ट्रैटेजीज के मैं आपको रूल्स बताऊंगी, हर एक स्ट्रैटेजीज के मैं आपको चार्ट सेटअप्स फ्रॉम माय साइड बताऊंगी. ठीक है, चार्ट सेटअप्स आर जनरली वी डू नॉट इंक्लूड दिस, बट आई विल एक्सप्लेन यू द चार्ट सेटअप फ्रॉम माय साइड. I will also, I have taken some trades, I will share my own trades also with you all. Okay, now just be with me. Okay, so we will be learning about a covered call, covered put, and a collar. Now covered call. So what is a covered call strategy? There's no stop, you will do future. You will buy future and you will sell out of the money call. ये क्या strategy है? You will buy a future and you will buy OTM call. Okay, strike selection is OTM call. Now
डू यू हैव एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द स्ट्राइक फॉर फ्यूचर? कोई ऑप्शन है कि जो फ्यूचर का प्राइस है वो है, राइट? और कैन यू सिलेक्ट स्ट्राइक्स फॉर फ्यूचर? यू कांट, राइट? जो है वो ही है फ्यूचर की प्राइस। सो फ्यूचर के प्राइस आप बाय करोगे और आप OTM कॉल सेल करोगे। नाउ व्हाट इज दिस OTM कॉल? आप कैसे OTM कॉल करोगे? अंडरस्टैंड वन थिंग, डेल्टा जो अपने देख रहे थे, दैट इज ओनली फॉर बाय कॉल एंड बाय पुट, बिकॉज नथिंग एल्स इज हेल्पिंग इट। आप ही वो खाली एक ही इंस्ट्रूमेंट अपने आप चल रहा है, बाय कॉल एंड बाय पुट। इन फ्यूचर इसको हेल्प कर रहा है ना, कोई और दूसरा ऑप्शन का अंदर आके उसको हेल्प कर रहा है। नोबडी इज हेल्पिंग इट, ही इज बाय हिमसेल्फ, द लॉन्ग कॉल एंड लॉन्ग पुट। दैट इज व्हाई वी नीड द डेल्टा टू चूज द राइट डेल्टा फॉर एक्सेलरेशन. When we are doing strategies, you will forget about the delta 25 and 30. You will forget about that. Why? Because यहाँ पे अभी combinations हो रहे हैं, फ्यूचर भी आ रहा है, कॉल भी आ रहा है, I mean too many things are happening now. Now not only one instrument is running, so everything affects each other. So at that time, do not now look at your call 25 delta, but understanding has to be there कि 25 से acceleration चालू होने वाला है delta का. But now strike selection, now you will tell me should I pick the 25 delta? You can if you want to, but I don't think so. You need to choose this strike by looking at delta. Okay, I hope that's clear. So what strike will you choose over here? You will choose the sell OTM call, the strike beyond which you think the stock will not go. Did you understand? I don't think the stock is going to go above. Reliance की बात कर रहे हैं अपने, Reliance current market price is say 2640. Okay, so 2640 agar is the current market price of Reliance. You think Reliance will not go above say 2480. 2480, ठीक है? 40 पॉइंट्स का मूव आपको दिख रहा है रिलायंस में कि 2440 से 2480 जाएगा। आपको नहीं लगता है कि 2480 से ऊपर जाएगा रिलायंस? तो आप क्या करोगे? आप फ्यूचर बाय कर सकते हो एंड 2480 का कॉल सेल कर सकते हो। आर यू विथ मी? You will buy future and you will sell 2480 call. Where did you get 2480 from? That is the price you think Reliance is not going to go above 2480. Got it, guys? I hope this is clear. Strike selection. Clear? Okay. So you can also pick up the long this thing जहाँ पे वो build-ups जहाँ पे हैं, that also you can see. ठीक है कि build-ups कहाँ पे है और आप वहाँ पे call side the biggest the maximum number of open interest, that also you can see. Okay, now you will do OTM call, correct? Okay, right? So this is there, break even. Now expiry, the best time to trade this is 10 days before expiry, but I would say you can trade this even otherwise, not a problem, because it's a sell call over here. That is why it is written that you do 10 days before expiry, but it is okay to even do it otherwise. Okay, now 10 days before expiry is going to give you the best profits. Okay, I will show you all how. I'll come to the setup. Okay, now you will what this thing will you look at? IB conditions, maybe section 4, but जब भी कोई भी फ्यूचर इन्वॉल्व होता है, when you're doing a strategy, your volatility will not matter so much कि वेगा कहाँ पे है. It will not matter so much. Okay, why will it not matter so much? Because future is a very powerful instrument anyways, जिसको थीटा अफेक्ट नहीं करता है. Okay, so you do not need to basically look at the IVs when you are doing any strategy where a future is involved. Okay, any strategy where a future is involved, you will not do it's okay what the Vega is, but अगर IV high है तो आपने sell call किया है, right? आपने sell call किया है, you bought future and you sold call, so you are receiving premium.
So obviously आपको premium ज़्यादा मिलेगा if the IV is high. So that's an advantage. Okay, that's an advantage. But it is not a requirement कि ये अगर नहीं है तो आप trade नहीं लोगे. So that is not a requirement. You can take the trade regardless, even if the IV is in whatever conditions. Only a higher IV will help. Okay. Now,